Hello members, this is Aman from Upmost Talks. We hope that you are doing well. So as we had anticipated that Nifty 50 is likely to continue its upward journey, it has done so today also. So it has moved up by around 185, 180 points today itself. So what can happen tomorrow? Yes, Nifty 50 is in a very strong momentum. So the possibility of upside is more than a downside. So what can happen tomorrow is because we know that Nifty 50 can go, we will try to first identify the resistance levels. So we have already identified three resistance levels that can work for tomorrow. The first one is 17,843. The second one is 17,900. And the third one is 17,963. The ultimate target of Nifty 50 remains to be 18,800. How we have calculated that target, for that you can watch our previous video that was posted yesterday. That was based on the V-shaped recovery that Nifty 50 has made. So Nifty 50 has even given a breakout of that pattern today itself. So what can happen tomorrow is Nifty 50 might gap up, it might go up, and if it continues to stay above 17,843, then it can surely go up to 17,900. And if 17,900 is also broken, then we might see 17,963 tomorrow itself. And if the momentum continues to go on, then 18,000 will be very close tomorrow itself. So yes, we are talking about a movement of maybe around 100 to 140 points tomorrow itself. So let's see if it happens or not. But three major levels that you need to keep in mind would be 17,843 on the upside, 17,900 and 17,963. These three levels can work for you tomorrow. On the downside, now the support would be first at 17,635, which is the neckline of the breakout level. So if you can see, or you can say which is the neckline or the breakout level. So this neckline is to understand how this neckline has been arrived, you need to watch our previous videos. However, just repeated, this V-shaped pattern shows the kind of recovery that Nifty 50 has been trying to make. So today Nifty 50 has given a breakout of this pattern and also closed above it. So this is the neckline of the V-shaped pattern, and now it has been confirmed, or you can say that Nifty 50 might touch 18,800 maybe in the next few weeks or maybe a month or so. So what will happen once a resistance is broken, it becomes a support for that particular stock or index. So this was, you can say that this was acting as a resistance for Nifty 50, because you can see that previously also Nifty 50 has declined from this level. So this was the resistance. Now it will act as a kind of support. So when Nifty 50 will try to come back, it will first find support at 17,635 before it finds support at lower levels. The next immediate major level would be 17,530. That is determined by using this flag line. So you can see that it is coming around 17,530 if we take a day or two, and if we take tomorrow itself, so it is coming around 17,510 to 17,515, because exactly we cannot draw the, but we can only make an estimate. So on the upside, three major levels will be there: 17,843, 17,900, 17,963. And on the downside, two major levels will be important. The first one would be 17,635 and the second would be 17,510 to 17,515. This support will keep on changing. However, this support will remain relevant till Nifty 50 like continues its upper journey. Then support will also move on, and intermediate supports will also then become relevant, because as these resistances will get broken, so these resistances will also act as support for Nifty 50 in the days to come. So tomorrow, please observe these three levels and take a note of them. Our videos are only for education purposes. Please do not make any position based on our videos. You need an expert or financial advisor who can help you in taking positions and advising you stop loss and helping you with trades in which you get stuck in case Nifty doesn't move in your favor. So please make sure that our videos are only for education purposes. These levels have been determined based on our own analysis. Your advisor or your consultant may have a different approach of identifying levels. So please consult your financial advisor. The ultimate target for us remains to be 18,800, which can come maybe in next few weeks or maybe a month or so. But is it a guaranteed level? No, there's nothing as such. There's no such thing as guaranteed stock market. It can even go to 20,000. But as of now, we are simply doing things based on the patterns. We are calculating levels on the basis of patterns, not on the basis of what can happen in the future. Yes,
In future, this level can reach provided this pattern continues to work. So these are the important things. Yes, if you want to analyze things in detail, then you will have to watch our previous videos, and then you will understand how this flag pattern was developed, and how this W pattern has been prepared, and how this V pattern was discussed yesterday also. So we hope that everything is clear to you. In case you have any queries, you can post your comments in the comment section. We will reply to them ASAP. अब फटाफट से हम लोग इसको हिंदी में भी डिस्कस कर लेते हैं अपने हिंदी व्यूअर्स के लिए। तो आपने देखा कि आज जैसे कि हमें एंटिसिपेशन था कि निफ्टी 50 ऊपर जा सकता है, तो निफ्टी 50 ऊपर गया भी 180 पॉइंट से और अपने हाई के अराउंड ही क्लोज भी हुआ है। तो ये पॉजिटिव साइन है, मोमेंटम स्ट्रांग है। पर अब कल क्या हो सकता है वो हमें स्टडी करना चाहिए। तो कल के लिए हमने 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई किए। उनमें से पहला आ रहा है 17843, ये मैं आपको रेजिस्टेंस बता रहा हूँ अप साइड पे। दूसरा 17900, उसकी लाइन हमने ड्रॉ नहीं किया क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है। और तीसरा होता है 17963। तो क्या हो सकता है, अब देखिए कि अभी बहुत सारे जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं क्योंकि निफ्टी 50 17800 के ऊपर बंद हो गई है। अगर वो 17800 के ऊपर ही ट्रेड करती रहती है कल सुबह, तो वो अपनी कवरिंग्स करेंगे और निफ्टी 50 को बाय करना शुरू करेंगे। तो जैसे वो बाय करना शुरू करेंगे और अपनी पोजीशन को क्लोज करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली निफ्टी 50 ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो आप ये 3 लेवल्स का ध्यान रखिए, 17843, 17900 एंड 17963 ऑन दी अपसाइड। जैसे 17843 क्रॉस होगा और निफ्टी 50 उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगी, आपको 17900 जल्दी ही नजर आना चाहिए। एक बार 17900 क्रॉस हो गया और उसके ऊपर थोड़ा सा फोल्ड करना शुरू कर दिया, तो 17963 आराम से आ सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि निफ्टी 50 कल भी 120 से 140 पॉइंट मूव कर सकता है, प्रोवाइडेड मोमेंटम ऐसा ही रहे जैसा कि अभी है। हमने ऊपर की तरफ लेवल्स डिस्कस कर लिए, अब हम नीचे की तरफ लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने देखा है कि जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जा रहा है, सपोर्ट लेवल भी ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। पर क्योंकि आज निफ्टी ने वी शेप पैटर्न का ब्रेकआउट दे दिया है, तो जो जहां पे ब्रेकआउट आया है जिस पॉइंट पे, वो अब एक तरह की सपोर्ट की तरह काम करेगा निफ्टी 50 के लिए। क्यों? क्योंकि निफ्टी 50 के लिए ये एक तरह से पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 यहाँ से ऊपर गया था और यहाँ से ही नीचे गिरा था, तो एक तरह का रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये। अब ब्रेकआउट आया है तो ये ऑब्वियस ही बात है इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा जब निफ्टी 50 वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो पहला सपोर्ट अब कुछ दिनों के लिए बन जाएगा 17635, और उसको तोड़ देने के बाद कल के लिए जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो अराउंड 17510 से लेके 17530 आ रहा है। हमने यहाँ पर लिख दिया ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्योंकि हमें पता नहीं कैंडल कहाँ क्लोज होगी। तो अब 17510 से 17530 तक की वैल्यू को लेकर चल सकते हैं कि हाँ ये नेक्स्ट मेजर सपोर्ट हो सकता है निफ्टी 50 के लिए। अगर मैं अभी भी देखूं तो ये अराउंड, अगर मैं कल की कैंडल ही देखूं, मान लीजिए कल 5 जनवरी है, तो कल के लिए जो सपोर्ट ये दिखा रहा है वो दिखा रहा है यहाँ पर ऐसा 17443 दिखा रहा है, पर कैंडल थोड़ा और ऊपर होगी कल, तो हो सकता है यहाँ पर कहीं पर आए। तो अभी आप इसी को लेकर चले 17500 का आप एक सपोर्ट लेकर चल सकते हैं। वैसे आना नहीं चाहिए कल, बट कुछ कह नहीं सकते स्टॉक मार्केट में। तो 17530 17500 तक सपोर्ट रहेगा। ये आप 2 दिन के लिए भी लेकर चल सकते हैं, कल और परसों के लिए। ये दोनों लेवल्स आप कल और परसों के लिए भी लेकर चल सकते हैं। तो ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट पहला आपका हो गया 17635। इस पे आप ध्यान रखिएगा, ये टूटने के बाद फिर वो 17500 तो रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल, उसके बाद 17600 भी रहेगा। बट मेजर लेवल्स जो हैं वो अब ये निकल के आ रहा है 17635 और 17530 अगले 2 दिन के लिए। 17530 आप अगले 2 दिन के लिए लेके चलिए, 17635 तब तक के लिए जब तक ये टूटता नहीं है। तो ये आपके रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। तो अगर आपको कुछ भी और जानना है कि वी शेप पैटर्न कैसे बना, ये डब्ल्यू पैटर्न कैसे बन रहा था, ये फ्लैग पैटर्न कैसे बना, उसके लिए आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन आती है, कुछ क्वेरी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए और हम उसका रिप्लाई आपको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। प्लीज ध्यान रखिए कि ये जो लेवल्स हम निकाल रहे हैं ये हमारे खुद के एनालिसिस पे बेस्ड है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके ही कोई भी ट्रेड लीजिए, क्योंकि उनके एनालिसिस करने का तरीका अलग हो सकता है। वो कुछ और तरीके से आपको एडवाइस करें किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए। हमारा तरीका थोड़ा हो सकता है अलग हो, उनसे डिफर करे, और हो सकता है उनसे एग्री भी ना करें। तो ये लेवल्स आप मॉनिटर कर सकते हैं कल कैसा परफॉर्म करते हैं। इफ दे वर्क वेल एंड गुड, पर आपको कोई भी इनके बेसिस पे ना ट्रेड लेना है ना ही पोजीशन बनानी है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। वी होप दैट आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, हमारा एनालिसिस ठीक लग रहा होगा।
अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप प्लीज हमसे पूछ सकते हैं. सो विद दिस आई एम अमन साइनिंग ऑफ. बाय बाय, टेक केयर.